नमस्कार। विद्या भारती काशी प्रांत के इस लाइव क्लास में आप लोगों को स्वागत और अभिनंदन है। आज वी आर गोइंग टू स्टार्ट वन ऑफ द important topic for the NEET as well as for the JEE aspirants. Now I am going to start today's topic, that is electronic devices. This electronic devices unit will cover near about 1/10 of your NEET or JEE syllabus, and out of 45 question of the NEET, this unit will cover 3 questions, and if you go in the content wise, your content of this unit is very small, but it will cover 3 questions of NEET. So it is very important topic for the students who are going to appear in NEET or JEE. So let us start this topic, that is electronic devices. This unit contains energy band diagram, how can we differentiate between the material, insulator, semiconductor, because this for the electronic purposes we need semiconductors. So how we differentiate the semiconductor from the metal or conductor or from the insulator, and then we go for the some how can we make device from this semiconductor, and then in this unit we will cover the digital part. Digital part means we have some logic gates. We will cover the logic gates. So basically, if you divide this unit, electronic devices, we will divide into 3 parts. One is properties of the semiconductor, how we differentiate the semiconductor from the metal and insulator, and next how can we convert this material semiconductor into a device, and third how can we design some circuit with the help of digital world. Now let us start for first thing, what is the semiconductor? So we know this term contains semi and conductor. So you know conductor, as to the definition of conductor, which can carry current, it is known as conductor. Conductivity, movement of the current through this material. And second thing is, one word is free electron. So now how it is different from the semiconductor, and third is your insulator. So how can we differentiate? Yeah, what are the differences between these 3, semiconductor, conductor and insulator? So on the basis of some parameter or the properties of the material, we can differentiate. हम इसको इनमें अंतर देख सकते हैं कि क्या हमारा सेमीकंडक्टर है, क्या कंडक्टर है, क्या इंसुलेटर है. तो first thing, how can we differentiate this? So first thing, conductor. We are knowing very well what is conductor.
in our houses we are using different current carrying wires, electric wires through which current will carry. So generally we are using aluminum, copper. So these are the metal and these are known as conductor. They are good conductor of electricity. मतलब कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन जो इसमें इजीली फ्लो कर सकते हैं. तो अब ये आपका कंडक्टर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर से डिफरेंस कैसे इसमें आता है. तो फर्स्ट थिंग है इसमें, if you make a chart, that is on the basis of property, say first we take the free electron. What is meaning of free electron? If you go the atomic structure of any element, say for example we will take the sodium Na. In this sodium, the atomic number of sodium is this atomic number. This is 11. Means it has 11 electron. So and we know the distribution of this electron, electronic configuration of this atom is 1s2 1s2 2s2 2p6 3s1. So this is the SPDF nomenclature as per the quantum physics. S orbital, p orbital, d orbital and f orbital. So in this, electron is distributed 2, 8, 1. As the principle of Pauli exclusion principle, we can write this electronic configuration. So in, you can say, if you make a diagram, this is your sodium, this is nucleus, and we have 3 orbits. In outermost orbit you have only 1 electron. This is your totally occupied, and we have 2 electron in the first orbit. In the second orbit we have 8 electron, and in the third orbit we have 1 electron. You can see in this outermost orbit we have only 1 electron. So if your atoms are separated for a high distance, then what's happen? हम सभी जानते हैं कि बोर्ड्स का जो एटॉमिक मॉडल है, ये जो ऑर्बिट्स हैं, ये एक पर्टिकुलर वैल्यू जो आपका उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं ऑर्बिट्स में एग्जिस्ट कर सकता है या रिवॉल्व कर सकता है, विच हैज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई. एंगुलर मोमेंटम इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई. Only in those orbits electron can revolve or electron can stay. It cannot stay between these two energy levels. So these have a particular energy, so it is known as energy levels. We can also define like this for sodium. This, it is for 1s1, say it is, you can say it is 1s1. Second is your 2p 2s2, p6
and last one is your 3s1. So these are the energy levels, and we can calculate the what are the energy with the help of Bohr's formula. E is proportional to 1 by n square. Now, so this is, you can say your electron is lying in the outermost orbit in this 3s1. So these electrons, innermost or inner orbits electron, this or this, they are bound with the nucleus. There is Colombian force that will exist between this nucleus has positive charge and these electrons have negative charge. So they are tightly bound, you can say. So this is the bound electron, and this is outermost electron. So it is loosely bound. You can say it is away from the far away from this nucleus. तो दो आपके बीच में जो फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, कोलम्बियन फोर्स लग रहा है, वो सबसे कम इसी इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है. तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है, इसके ऑर्बिट से भी निकालना है, तो इसको निकालना सबसे आसान है. तो इसको कह सकते हैं हम लोग बैलेंस इलेक्ट्रॉन. ये हमारा जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑर्बिट्स के, दे आर नोन एज बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. So we can use this electron for the conducting purposes, but if electrons are inside this orbit, it cannot help in conductivity. So we should remove, we should free from this nucleus, then this electron will participate in the conduction. So how can we remove, how can we extract this electron from this atom? So by giving some external energy. If you supply energy from the outside, this electrons acquire this energy and go outside the atom, and this atom becomes ion, and this electrons are available for the conduction. So in conductor, so we have large number of free electrons. If electrons comes outside from this, if this electron comes outside, then it is not free electron. So we have two types of electron. One is bound. This is bound electron, and this is your which are free from the orbit, that is a free electron. So this free electron is responsible for the conductivity. So on the basis of this free electron, we can say this conductor has large number of free electrons. Large number of free electrons. And this insulator has, you can say, no free electron. Since we know these free electrons are responsible for the conductivity. So if there is no free electron, means conductivity is 0 in this. Value of sigma is 0. In this you have large conductivity because you have large number of free electrons. Now what's happened for semiconductor? So in the semiconductor, at 0 degree temperature, at absolute temperature, at T 0 degree Kelvin, this conductivity is 0. There is no free electron. It will behave as an insulator. But at room temperature, if T 25 degree centigrade or 273, 300 degree Kelvin near about, this is room, your defined room temperature.
is your room temperature. At this we have a sufficient number of electrons, but numbers of these electrons very less, but it is non-zero. Number of electrons is very less, but non-zero. So we can say the conductivity lying between this conductor and in this insulator, in between this, it is less than the conductor but more than the insulator. So this is the one component on which we can differentiate this conductor, semiconductor and insulator on the basis of free electron. Okay. So this conductor has large number of free electrons. It has very less but non-zero at room temperature, but at 0 degree Kelvin absolute temperature 0, it has 0. At insulator you have no free electron. So conductivity is 0. It has moderate, very small conductivity, and it is very large conductivity. So on the basis of this, another thing is so first thing is conductivity. So it has very large conductivity. It has a small, and it is 0. The reverse of this conductivity is resistivity. So you can say if you have large conductivity, your resistivity is very small. And this has a small conductivity, so it has large, and you can see it is infinite type on the basis of resistivity. Other is your free electron. So it has very large number of free electron. It has very small, and it has no free electron. And what are the behavior of these materials with temperature? So the behavior with temperature. If you increase the temperature, what happens? So if you increase the temperature, the conductivity of this conductor will decrease. If you increase the temperature, this upward sign is give the increasing. Temperature is increasing. If you increase the temperature, the conductivity, this sigma, will decrease. Or you can say this rho, this resistivity, will increase. This rho will, and what's happened in this semiconductor? This sigma will increase, and this rho will decrease, and there is no effect on this. So on the basis of this behavior, on the base with temperature, we can say the resistivity is your positive resistance coefficient, means your resistivity increase with the increase of temperature. It has negative resistance coefficient. Okay. Since why we have this type of behavior? So what is the resistivity?
Yeah, what is the conductivity? Flow of electron is the responsible for the conductivity. And what is resistivity? If electron is flowing, instead of electron, we have other large things. We have ions, we have other electrons, we have some defects in the solid. So, if electron is moving, and we know the this atom is vibrating along its position. So, if you increase the temperature, so if you consider the atomic structure, atomic configuration of, say for example, sodium, in outermost orbit we have one electron. If you increase the temperature, it is more possible to electrons to gain energy from this outside supply with the temperature. So that is with the help of Boltzmann constant, we can give the relation kT. This is energy, amount of energy will supply to the electron, and this electrons comes out from the orbit. So most possible and most probable is the outermost electron will come out. But if you have supply more energy, then the electrons from the other orbits, means in sodium 3s1 is the outermost electron. It is also possible 2p6 electrons comes outside. If you supply the energy, means with the increase of temperature, number of electrons will increase. So if number of electrons will increase, means your conductivity should be increased. But in conductor, it happened reversely, in opposite direction. Means if you increase the temperature, conductivity will decrease. Instead, free electrons will increase, but conductivity will decrease. So why we have this thing? If you increase the temperature, okay, the electron तो आपके free हो रहे हैं, number of electrons बढ़ेंगे, लेकिन साथ में क्या होगा? जो atoms vibrate कर रहे हैं, उनका amplitude बढ़ जाएगा. तो जो total average effect होगा temperature का, जो electrons number of increase हुआ है, they will hindered by the this vibration of atoms, because amplitude of this atoms will increase. So it is more possible to collision of this electron with the ions, vibrating ions or other defects. So resistivity will increase. Same thing आपका सेमीकंडक्टर में भी होता है. इलेक्ट्रॉन्स टेम्परेचर के साथ बढ़ते हैं और आपका जो एटम के वाइब्रेशन है सॉलिड के अंदर, वो भी आपका एम्पलीट्यूड बढ़ता है, आयाम बढ़ेगा. लेकिन क्या होगा इन टोटलिटी, जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो आपके जनरेट हुए हैं, जो मिले हैं टेम्परेचर के कारण बढ़ने के कारण, उनकी संख्या और जो आयाम बढ़ने के कारण जो कोलिजन हो रहा है, स्कैटरिंग हो रही है, जो उनकी संख्या है, इन टोटलिटी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, अवेलेबल हो जाते हैं मान ली कंडक्टिविटी के. तो टोटल इफेक्ट हो जाता है हमारा, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, रेजिस्टिविटी घट जाती है. तो सेम दोनों ही मटेरियल पीरियोडिक टेबल के हैं, लेकिन दोनों का बिहेवियर अलग है. यही बिहेवियर सेमीकंडक्टर को कंडक्टर से डिफरेंशिएट करता है कि विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर conductivity will increase, resistivity will decrease, while in conductor with the increase of temperature your conductivity will decrease and resistivity will increase. And in insulator there is no effect of this temperature. So why we have this type of behavior? Nowadays we have a important concept of band diagram. On the basis of band structure, we can differentiate this semiconductor, conductor and insulator. So what is band theory? We have different theories to explain this thing. So first theory is Sommerfeld theory, then we have electron theory, then we have a near-leaf electron theory, then we have band theory. So now
Nowadays we are defining this differentiation between semiconductor, conductor and insulator with the help of band theory. So what is band theory? What is band? Already I have told you that for the sodium we have on the basis of this we have a energy levels. This is your 1s1, this is your 2s2, then we have 2p6, and then we have 3s. Means for particular one is two, sorry. So for particular orbits we have a particular energy levels. You can say it is a very sharp defined levels. So this is E1, E2, E3 and E4. They are very sharp defined. तो when atom is isolated, मतलब आपका एटम अगर दूर दूर है, सॉलिड भी आपका है, तो सॉलिड को ना करके हम लोग गैस फॉर्म में कहें, गैस फॉर्म में क्या होता है, एटम दूर दूर होते हैं, तो अगर उसका हम लोग डायग्राम प्लॉट करेंगे नहीं जाएंगे तो आपको लाइन टाइप का मिलेगा, मतलब एक शार्पली डिफाइंड एनर्जी लेवल्स मिलेंगे. लेकिन अगर इसी गैस को आप सॉलिड में कन्वर्ट कर दो, या आप कह सकते हो कि एटम्स को हम बहुत नजदीक ला रहे हैं, बहुत हम नजदीक ला रहे हैं, कि दूरी को कम कर रहे हैं या सॉलिड बना रहे हैं, तो क्या होगा, ये एक एटम का आपके सोडियम का है, इसी तरह बहुत सारे एटम हमारे सोडियम के उसके अंदर हैं गैस में, अगर उसको सॉलिड में कन्वर्ट करोगे तो ऑल दी सोडियम एटम्स will start interaction, and since energy levels of all the atoms are like this, they are well defined, you can say this is the fingerprint of the atom. अगर कोई एटम को पहचानना है तो अगर उसकी एनर्जी लेवल हमें मिल गया है, तो अगर किसी भी अननोन मटेरियल का एनर्जी लेवल वही मिल रहा है, जिसका मतलब वो एटम जो हमने ऑलरेडी डिफाइन किया वही एटम होगा. ठीक है, ऐसे फिंगरप्रिंट है, हम लोग किसी को पकड़ने के लिए फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करते हैं. सेम थिंग वी कैन अप्लाई हियर फॉर द एनर्जी लेवल्स. So these energy levels are constant. This is a fix for a particular atom. So if you are going to decrease the distance between the atoms, then these energy levels start splitting. Splitting means these atoms will start interaction. There are Coulombian interaction and other interactions, and these energy levels start, instead of a fix, they start splitting like this. And so on. Means you have large number of sub energy levels here. So some of the electrons go in the upper part, some are going in the lower part. Similarly, this 2s1 will split, this will split, and so on, this will split. So instead of a single energy levels, we have a combination of energy levels, and this is known as band. Okay. This is known as band. So this is the corresponding to 1s2 band. This is for the 2s2 band. This is for 2p6. This is for 3s. And as per the Pauli exclusion principle, since this is the outermost, this 3s1 is the outermost for the sodium, so it is useful for us because it is very easy to eject electron from this energy level, extract electron from this energy level or from this band. So all the electrons of sodium
which are lying in the this 3s1 energy level. So we can make another diagram. So you can say we have bands like thing. This is corresponding to 1s1, 1s2, it is 2s2, it is 2p6, it is 3. So we will concentrate our on this because it is outermost. It is known as balance. And there is gap between the bands. It is 1s2 band, so we have gap like this, we have gap like this, we have like this is known as gap, band gap. Since these three labels are closer to the nucleus, so electrons available in these bands are tightly bound with the nucleus, and electrons in the outermost orbit are loosely bound. And for this particular sodium atom, we can say all the electrons are lying in these energy levels. So since it has only one electron, and what are the maximum capacity of this S? It can contain two electrons. One is spin up, another for spin down. Since it has only one electron, so all the electrons are the same spin. So only half of this band is filled because other electrons are non-available. So half of the energy levels filled and half of this empty. So this is the band diagram of this sodium. So on the basis of this band diagram, we can differentiate this conductor, insulator and semiconductor. So how can we differentiate? On the basis of this band diagram, let us say some so for conductor we have basically four situations. So we will confine over only for the valence band, and then other band is conduction band. So we have there are four possible situations. One is possibility is, say we have this energy level, and so this is your valence band. It is your valence band. And this is your conduction band. So what are the difference between these two, conduction and valence band? So valence band means, as per the atomic structure of any atom, electrons are distributed in different energy levels. Outermost orbit electrons, outermost energy levels electron are known as valence electrons. Because in covalency or electrovalency, outermost electrons are responsible for that. So it is known as valence electron. So all the electrons lying in the outermost orbit, that is known as valence electron. So this is your valence band, and electrons lying in this is known as valence electron. And above this valence band, we have another band that is known as conduction band. Electrons lying in this valence band are bound with the nucleus. They cannot participate in the conduction. In
इनका कंडक्शन में उपयोग नहीं हो सकता है क्योंकि ये आपके न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से बंधे हुए हैं। इनका उपयोग तभी कर सकते हैं जब ये अट्रैक्शन से फ्री हो जाए। तो इसका मतलब इनको हमें फ्री करना होगा। तो हाउ कैन बी मेक इट फ्री? तो जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन हैं जो आपके बैलेंस में हैं, तो ये अगर इनको आप एनर्जी दे दोगे बाहर से तो क्या होगा, ये एनर्जी एक्वायर करेंगे एंड दे मूव इनटू द upward direction, come into the next band in this, here, and here we have a vacancy. Electrons will come here, and absence of this electron, here we have a vacancy. So how much energy required to move electron from transit electron from this valence band to conduction band, depending upon the band gap. This is your band gap, this thing. So on the depend value of this band gap, required energy we can define, and this is your, in electron volt we have this EV, E is the electronic charge, V is the external voltage applied to the atom, the external electric field applied to the atom. So by acquiring this energy level, this move into the conduction band, and if electron come in the conduction band, it is available for the conduction. It becomes free. It is your free. It is your bound. So to make it free, we will supply energy outside, either by the thermal energy, by the temperature, or by applying some voltage in the form of electric field, or by any other means, with the help of photon, with the light, or we have different means to provide the energy to these electrons to make it free. If electrons come here, so on the basis of this valence band, we can categorize these. So there are four possible situations. One situation is, say this your band is half filled. It is, so this is your half filled. आपका ये आधा भरा हुआ है, पार्शियली कह सकते हैं इसको। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को निकालने की पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे एनर्जी लेवल्स अवेलेबल है। अगर आप एनर्जी सप्लाई करोगे तो यहाँ के जो इसमें यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स है, दे विल मूव इन द अपर एनर्जी लेवल, और if you apply sufficient energy, they move into the conduction and become free. So it is known as semi-metal line. Other thing is, we have this type of situation. Say we have this energy level. This is your, and this is one conduction. It is your CB. Conduction band, this is your valence band. This is completely filled, and this is empty. तो क्या होगा यहाँ का, अगर आप बाहर से एनर्जी दोगे इसको, तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव कर जाएंगे ऊपर, और यहाँ पे आपका एब्सेंट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो इसको कहते हैं होल। Efficiency of electron is known as hole, and this is your free electron.
तो जो आपका मेटल कंडक्टर है उसमें सिचुएशन जो होती है, इसमें जो कंडक्शन बैंड है आपका, ये this conduction band is overlapped. This will be overlapped. So this conduction band and valence band will overlap. Means there is no requirement of external energy to make it free. Because all the electrons are behaving as a free electron. So conductivity is very high because they are overlapping. जो भी अगर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में गया इसका वो फ्री हो गया, तो चूंकि कंडक्शन और बैलेंस बैंड दोनों को ओवरलैप का एक दूसरे के ऊपर है, तो कोई बीच में गैप नहीं रह गया। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में हैं वो सब फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करेंगे और कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट, कंडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो कंडक्टिविटी वेरी हाई होती है। बट सेमीकंडक्टर में क्या है आपका, इन सेमीकंडक्टर we have, this is your valence band and we have a conduction band CB, and we have very small gap, small band gap. So if you supply external energy, the electrons will move from here to here and becomes, here we have hole, here we have free electron, and this band gap is very small. So you can say in material there is no band gap, in this we have very small band gap, and in insulator this gap is very high. Very a large band gap you can say. So if you go for a semiconductor, in periodic table fourth group element are semiconductor. Basically we have well known semiconductor silicon Si, silicon and germanium. The silicon has band gap, this silicon has band gap 1.1 electron volt, and this germanium has band gap 0.72 electron volt here. Means if you apply outside energy of 1.1 electron volt, so electrons are available in the valence band, they becomes free, and similarly for germanium this is 0.7. So this is your, means this semiconductor, how it is useful. So in room temperature it will behave as a non-conductor, but if you supply some energy from outside, it will convert itself into conductor. So this property is very important for the device purposes, because you can use a switch like thing. जैसे आप स्विच ऑन ऑफ करते हो, स्विच ऑफ किया आपकी करंट बंद हो गई, कनेक्शन कट गया, तो स्विच को ऑन किया आपका कनेक्शन आपका जुड़ गया, करंट फ्लो करने लगी। सेम थिंग यहाँ पर भी है। इस सेमीकंडक्टर को हम लोग स्विचिंग की तरह यूज कर सकते हैं कि अगर हमारा बैंड गैप से कम एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होंगे, कंडक्शन नहीं होगा, और अगर हमने बाहर से एनर्जी इतनी दे दी, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, वोल्टेज अप्लाई कर दिया, हमने दे दिया या कहीं थर्मल मीन से दे दिया, तो हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, कंडक्शन शुरू हो जाएगा। तो एनर्जी के रिस्पेक्ट में हम लोग या वोल्टेज के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करते हैं, जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उन सब में यही प्रॉपर्टी यूज होती है, सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी।
तो ये आपके जो सिलिकॉन और जर्मेनियम, दे आर वेल नोन सेमीकंडक्टर, दे आर नोन एज एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, क्योंकि ये एलिमेंट है, एक सिंगल एटम इसके अंदर है, सिलिकॉन के ही सारे एटम हैं, एक ही टाइप के एटम है, तो दे आर नोन एज एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स। और इनका बैंड गैप हमने बताया कि 1.1 इलेक्ट्रॉन और 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इसका अपना उपयोग है, लेकिन बहुत सा उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। जो और सारी डिवाइसेस हमको बनानी है, हमको ये बैंड गैप चाहिए, क्योंकि बैंड गैप ही कंट्रोलिंग थिंग है। अगर इतना बैंड गैप में जीरो कर दिया तो मेटल हो गया, कोई जरूरत ही नहीं है हमको स्विच बनाने की उसकी, तो उसका अलग बिहेवियर हो गया। तो ये मेटल बैंड गैप बड़ा क्रूशियल है। अगर हमें बड़ा बैंड गैप चाहिए, 1.1 से ज़्यादा चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, हम सिंगल एलिमेंट से नहीं प्राप्त कर सकते, हमें कंपाउंड बनाना पड़ता, दो से ज़्यादा, एक से ज़्यादा एलिमेंट लेने पड़ते हैं। तो गैलियम आर्सेनाइड है, गैलियम नाइट्राइड, जो आपके एलईडी यूज करते हो, वो सब में क्या है, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स ही हमारे। या जो हाई स्पीड डिवाइसेस हैं, जैसे आप मोबाइल यूज करते हो, सेम कन्फिगरेशन 4 GB और 64 का जो कन्फिगरेशन है, अगर उसका मोबाइल यूज कर रहे हो वो सस्ता मिल रहा है, अगर एप्पल का मोबाइल यूज करने जाओ महंगा मिल रहा है। तो ऐसा क्या हो कि एप्पल में क्या खास लगा रखा है उसने, या जो हाई एंड के मोबाइल्स उसमें क्या है, तो उसकी स्विचिंग स्पीड हमारी अच्छी, जो उसके मटेरियल यूज किया हुआ है वो सिंपल सेमीकंडक्टर की बजाय उसने कंपाउंड सेमीकंडक्टर गैलियम नाइट्राइड यूज कर रखा है, सिलिकॉन की बजाय गैलियम नाइट्राइड यूज कर रखा है, तो हमारा वहाँ पे स्विचिंग स्पीड बढ़ जाती है, या हमारा उससे स्मॉल कन्फिग्रेशन में लार्ज नंबर ऑफ डिवाइसेस कन्फिगर कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा अंतर है। तो हमें अगर और अच्छी डिवाइस बनानी है, तो हमें सिलिकॉन और जर्मेनियम से बाहर निकल करके कंपाउंड सेमीकंडक्टर की तरफ जाना पड़ता है। तो गैलियम नाइट्राइड यूज हो रहा है, तो ये आपके सिलेबस में नहीं, बट इतना है कि ये आपका ऑन द बेसिस ऑफ द बैंड थ्योरी वी कैन डिफरेंशिएट कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो फॉर कंडक्टर देयर इज नो बैंड गैप, zero band gap or no band gap. For semiconductor we have very small band gap, and for insulator we have very large band gap. So we have one thing, conductivity, resistivity, behavior with temperature on the basis of free electron and on the basis of band theory. So we can differentiate material, this conductor, semiconductor and insulator. You should remember this thing. How can we differentiate this conductor, semiconductor and insulator on the basis of different parameters? So this is important, that on the basis of band theory we can differentiate these three material. Now next thing is, if you use this semiconductor, now we will focus only on the semiconductor because our syllabus is electronic devices. So now we will focus only on the semiconductor. In this differentiation there is no numerical part, because in your syllabus only qualitative analysis is required. There is no numerical, quantitative analysis is not required for the semiconductor initial part, only qualitative analysis of required for the band theory. So we will focus only on the qualitative discussion only. There is no numerical in this part. Now we will focus on the semiconductor. So on the basis of this, we have two types of semiconductor. One is intrinsic semiconductor, other is extrinsic semiconductor. What is intrinsic semiconductor? It is, you can say, it is pure semiconductor. There is no impurity in this. It is pure
And already I have told you that semiconductor means fourth group elements are the semiconductor materials. So say for you have germanium or silicon, say for example silicon, say in the outermost orbit it has 4 electrons. In the outermost orbit it has, I am not showing other electrons. In the outermost we have only 4 electrons. Here we have only 4 electrons. And if you, this is the silicon structure, single atom. If you make a solid of this semiconductor, so what will happen? We have another semiconductor here, and in outermost we have 4 electrons. So these electrons will make a, here we have 4 electrons. So they will make covalent bond. Well, all the electrons are making covalent bond, and they will complete their octet, because we know octet maximum number of electrons in the outermost orbit should be 8. So they, with the help of covalent bond, they will complete their octet and they will form a covalent bonding, and with the help of this covalent bonding they are very tightly bound. So all the electrons are in the bonding stage. Okay, you can see from this figure in this crystal structure of this silicon. So all the electrons, one electrons from this silicon, other electron from this, make a covalent bond. Similarly for this, and similarly for this and this. So all the 4 electrons are make covalent bonds with the other silicon atoms. Means no electrons are free. It is true for the absolute temperature, 0 degree Kelvin. But if you apply some energy, if you come at the room temperature, 27 degree centigrade or 300 degree Kelvin, that is the room temperature, so some of the electrons will acquire energy from this increased temperature, and it comes outside from this bond, and they are known as free electrons. These electrons are known as free electron. And here where this electrons comes out, say from you can say here. So here we have a vacancy. They are known as, means you can say electrons and holes are generated in a pair. अगर इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है उसके करस्पॉन्डिंग आपका एक होल भी जनरेट होगा, ये पेयर में ही जनरेट होंगे, अलग अलग नहीं हो सकते. इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गया, होल नहीं जनरेट हो. इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है मतलब वहां पे एब्सेंस होगा इलेक्ट्रॉन का, वहां पे होल हो जाएगा. मतलब इलेक्ट्रॉन पे आपका नेगेटिव चार्ज है तो होल जो होगा उसका करस्पॉन्डिंग काउंटर पार्ट है, तो इट हैज पॉजिटिव चार्ज. तो होल आपका जो पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है, और ये आपका नेगेटिव चार्ज. Okay? So they are generated always in a pair form. So what is intrinsic semiconductor? There is no external thing. We have only the silicon atom here, silicon crystal here. Only one type of atoms are here, that is known as silicon. Or we have germanium, so we have germanium atoms. So only one type of atom here. So this is known as intrinsic semiconductor, because all the electrons are bound in the covalent bond. Only few number of electrons are available for the conduction, and these electrons are generated because of thermal agitation. किसके कारण जनरेट हो रहे हैं? थर्मल एजिटेशन का. जो टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया हुआ है 3/2 kT, जो आपका एनर्जी है वो आप ले करके इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में पहुंच गया है. तो आपके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे
ये बैलेंस बैंड में होल्स जनरेट हो गए, और जो कंडक्शन बैंड है आपका, ये CB जो है आपका, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग होल्स है, ये आपका BB बैलेंस बैंड है। तो ये, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है, ये हमारे लिए यूजफुल नहीं है, इनके कारण कोई कंडक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं हो सकती। लेकिन ये प्योर है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। लेकिन आप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कह रहे हैं, अगर इसको इम्प्योर कर दें, मतलब बाहर से कुछ इम्प्योरिटी मिला दे, इसमें कुछ बाहर से चीज मिला दे, तो ये हमारा काम का हो जाएगा। यही सेमीकंडक्टर की खूबसूरती, इसी कारण इसका एप्लीकेशन ज्यादा है। ये अगर इम्प्योर फॉर्म में है तब तो हमारा यूजफुल है, प्योर फॉर्म में तो यूजफुल नहीं है। जनरली हम लोग प्योर चीज मांगते हैं, लेकिन यहाँ पे प्योर चीज होने पे नुकसान है, तो हम इम्प्योरिटी मिलाते हैं। इसको हम लोग फिर डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। हम लोग, क्योंकि क्वालिटेटिव एनालिसिस था आपके सिलेबस में भी, नीट के सिलेबस में भी क्वालिटेटिव एनालिसिस ही है, तो हमें केवल न्यूमेरिकल उस पर जो आपका बैंड किसके बेस में कैटेगराइज कर सकते हैं, तो वो हमारा केवल डिस्कशन पार्ट ही है, थ्योरेटिकल पार्ट ही है, उस पर न्यूमेरिकल नहीं है। लेकिन आगे जो हम लोग करेंगे कि कितनी इम्प्योरिटी मिलाएंगे तो कितना ऐसी कंडक्टिविटी बढ़ेगी, कितने होल्स जनरेट हो जाएंगे, उन सब पे न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग। तो आगे जो क्लास होगी उसमें हम लोग हाउ कैन वी मेक दिस इंट्रिंसिक टू एक्सट्रिंसिक, तो हमें दो तरीके के इम्प्योरिटी मिला सकते हैं, जिसको हम लोग डोपिंग कहते हैं। बाहर से मिलाने को डोपिंग प्रोसेस होता है, उसमें हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी या पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं। तो ट्राइवेलेंट मिलाते हैं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, ट्राइवेलेंट मिलाते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाएंगे तो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। तो ये सिंपली इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, लेकिन अगर इम्प्योरिटी मिलाओगे तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाएगा। उसमें भी हमारे दो फिर एन और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाएंगे, जिसकी बैलेंसी हमारी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट हमारे हैं। और इसमें पी के लिए हम थर्ड ग्रुप एलिमेंट मिलाते हैं, इसमें फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट है, इसमें थर्ड ग्रुप एलिमेंट। तो ये थर्ड ग्रुप एलिमेंट मिलाने पे उसमें इनको हम लोग चार्ज कैरियर्स करते हैं, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स को चार्ज कैरियर्स कहते हैं। तो यहाँ पे चूंकि पेयर में जनरेट हो रहे हैं, तो अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करोगे आप, तो इलेक्ट्रॉन्स और जो होल्स हैं दे आर इन इक्वल नंबर, बट इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वन ऑफ द टाइप ऑफ चार्ज कैरियर्स आर मोर इन रिस्पेक्ट टू अदर। दो तरह के चार्ज कैरियर्स हो गए, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। एक में अगर पेंटावेलेंट कह रहे हैं तो वहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, दे आर नोन एज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। Similarly, in P type we have more number of holes, so they are majority. तो ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कैसे इसको बिहेवियर चेंज कर रहे हैं और फिर इनसे कैसे डिवाइस बनाएंगे। ये हो जाने के बाद फिर हम डिवाइस की तरफ बढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आपका दिन शुभ हो।